था जो स्टेप है उसे आप देखेंगे तो ये G20 मीटिंग्स संजय को यूरोप में तो कुछ देश है शिक्षित होगा युवा को नौकरी भी विकास की गति है जो सीमांत क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं है covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayeं, Yuva, and Annadata. Their needs, their aspirations, and their welfare
are our highest priority. The country progresses when they progress. All four require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth,
and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti, the empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time.
Number two, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number three, digital public infrastructure, a new factor of production, as if in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number four, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number five, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number six, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity, backed by Sabka Prayas, has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, "There is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit," unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments
and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care.
Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth. Largest milk producer with India is the world's largest milk producer, but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission. और शुरुआती 20 मिनट के भाषण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने बदलाव किए हैं। आज जो सभी की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बजट पर ही तो सब कुछ टिका होता है। बड़े उद्योगपति की आप बात कीजिए, महिलाओं की बात कीजिए, युवाओं की बात कीजिए, हर कोई आज इसी पर टिका हुआ है, बजट पर ही, कि आखिरकार उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में लुभाने वाले घोषणाएं भी हो सकती हैं। और ये यहां पर कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जब उनसे हमने चर्चा की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि आज महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं जो उनके लिए बहुत बेहतर होंगी। लेकिन अगर हम बिजनेसमैन, उद्योगपतियों की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इस पर नजर टिकाकर बैठे हुए कि आज इस बजट में उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। तो नई संसद में निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण शुरू कर दिया है, तो आइए आपको हम वो भी दिखा देते हैं। और
तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। पल पल की अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे कि आज के इस बजट में क्या कुछ खास है, आखिरकार क्या कुछ महिलाओं के लिए घोषणाएं हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात कि किसानों और युवाओं पर भी सरकार का यहाँ पर फोकस है। साफ तौर पर निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि हमें किसी भी तरीके से गरीबों को मिटाना है, और हमने कहीं ना कहीं उस पर कदम भी बढ़ा दिए, बहुत हद तक चीजों पे सुधार किया। 2014 की अगर आप बात करिए तो 2014 में चीजें बहुत ही अलग थी, लेकिन जब से मोदी सरकार आई तब से उन्होंने बहुत सारी चीजें की। हर घर में नल जल पहुंचाया, और जो गरीबी है उसे मिटाने का यहां पर काम किया गया है। तो आज का जो बजट है वो बेहद आम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए यहां पर बहुत सारी घोषणाएं हो सकती हैं, और सबसे ज्यादा फोकस यहां पर जो है सरकार का वो किसानों पर ही है। कई सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बजट से क्या कुछ निकलने वाला है, और ये बजट किसके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि बजट पर ही सब कुछ टिका होता है। सबसे ज्यादा महिलाएं जो हैं वो इस पर फोकस कर रही हैं कि उनके लिए आज क्या कुछ हो सकता है, क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा होने वाला है। इस पर भी हम लगातार आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। आप एकल भारत के साथ जुड़े रहिएगा। आज हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे इस बजट को लेकर। साथ ही साथ आपको निर्मला सीतारमण का हम भाषण भी सुनाएंगे कि आखिरकार वो बजट में क्या कुछ पेश कर रही है, क्या कुछ खास है। और गेस्ट के साथ भी हम जुड़ेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक ब्रिजेश तिवारी जी जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार ये बजट क्यों इतना खास है, क्यों सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। क्योंकि देखिए, आम चुनाव जो है उससे पहले मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी बजट है, तो ऐसे में कई सारी चीजें बजट में अलग की जा सकती हैं, और किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं पर जोर दिया जा रहा है। अगर आप शुरुआती भाषण की बात करें, निर्मला सीतारमण ने जो बजट अभी तक जो चीजें बताई हैं तो उस पर यही फोकस किया जा रहा है कि किसानों से लेकर महिलाओं, युवाओं पर ही हमारा जोर है, हम इन पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि मोदी सरकार ने किस तरीके से भ्रष्टाचार को कम किया है। देखिए, पहले बात होती थी कि अगर किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जनता के लिए कुछ भी दिया जाता तो वो बीच में ही भ्रष्टाचार हो जाता था, लेकिन अब सीधे खाते तक लोगों के पहुंचती हैं सब कुछ चीजें। तो ऐसे में भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम किया गया है। ये बात यहां पर निर्मला सीतारमण ने रखी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि देश में ज्यादा से ज्यादा जो रोजगार के अवसर हैं वो यहां पर सरकार ने बनाए हैं। पहले रोजगार, सब कुछ रोजगार पर ही टिका होता है, युवाओं को रोजगार की ही उम्मीद होती है कि क्या सरकार उनके लिए करे जिससे उन्हें रोजगार मिले। तो इस पर भी निर्मला सीतारमण का फोकस रहा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार ने रोजगार पर फोकस किया है। 2014 से ही काम शुरू हो गया था। और हमारे साथ हमारे संपादक ब्रिजेश तिवारी जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। मैं आपके पास ही आऊंगी ब्रिजेश जी, क्या कुछ आज बजट में खास होने वाला है? देखिए, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इस बजट पर, क्योंकि उद्योगपति से लेकर आम जनता तक, महिलाएं, युवा, हर कोई इस बजट पर नजर टिकाकर रखे कि आखिरकार उनके लिए क्या कुछ अहम होने वाला है। तो अभी तक जितना भाषण निर्मला सीतारमण ने दिया, जितने चीजें बजट को लेकर बताई, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जरूर सृष्टि, ये जो बजट है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसी बजट के साथ अगर हम बात करें, मोदी सरकार अगले 2024 लोकसभा चुनाव में जाने वाली है, और कहीं ना कहीं इस बजट को लेके बहुत खासा तैयारी है। जब बजट 11 बजे निर्मला सीतारमण संसद पहुंची और उन्होंने शुरू किया बजट पेश करना, तो उन्होंने पहले अपनी पुरानी उपलब्धियों को गिनाना शुरू किया कि क्या क्या पिछले बजट में और अभी तक सरकार ने किया। उन्होंने बात किया रोजगार का, कैसे उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म किया, इस पे बात की गई। निर्मला सीतारमण ने महिलाओं, किसानों की आमदनी को लेके बात किया, उन्होंने जनधन खाता को लेके बात किया, उन्होंने बात किया, पूरे लेखा जोखा बात किया कि कैसे हमने चंद्रयान तक की बात की, उन्होंने मिशन आदित्य की बात की, मिशन इंद्रधनुष के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा ही नहीं कि बस किसान के मामले में या फिर खेती, हम साइंस के मामले में भी आ गए। उन्होंने सशक्तिकरण की बात की, उन्होंने बताया कि भारत कैसे बेहतर विकसित भारत बनना है। 2047 जो पीएम मोदी ने लक्ष्य दिया है विश्व गुरु बनने का, उस पर कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये बजट जो होने वाला है किसान के लिए, जैसे जो एकल काम करता है कि किसानों के लिए, किसानों का उत्थान कैसे हो, इसीलिए ये बजट खास हो जाता है कि किसान, जैसे अगर किसान जितना सशक्त होगा, आम व्यक्ति जितना सशक्त होगा, महिलाएं जितना सशक्त होंगी, उतना ही सशक्त देश होगा। उन सब को ध्यान में रख के इस बजट को बनाया गया होगा। अब कुछ ही समय में, अभी तो पुराने बजट या आम चर्चा हो रही है कि अभी तक क्या हुआ, मजदूरों की बात है, जनधन का, आयुष्मान। मैं आपको बताऊं कि हेल्थ सेक्टर के काम को लेके निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैसे हेल्थ सेक्टर में काम किया गया है।
आंकड़े पेश किए कि किसान किसान जनधन किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने सब्सिडी के बारे में बात किया कि कैसे अभी पिछले बजट में काम हुआ है। तो सच में ये बजट बहुत खास है। और जहां तक उद्यमी छोटे उद्योग की उन्होंने बात की। और आपको बता दूं कि ये बजट होने से पहले कल जब राष्ट्रपति का भाषण हुआ था संसद सत्र में, तो उन्होंने ज्वाइंट सेशन को उन्होंने संबोधित किया था। उन्होंने कई बात उन्होंने रखी थी कि कैसे भारत विकसित भारत बन रहा है, कैसे अगले पंक्ति में आने का काम हो रहा है। तो अब कुछ ही पल में जो अंतरिम बजट है, जिस बजट के साथ पीएम मोदी या फिर भाजपा या एनडीए कहिए कि 2024 चुनाव में जाने वाले हैं आम चुनाव के लिए, तो लोगों के सामने जो रखेंगे, और कहीं ना कहीं आम आदमी अपने टैक्स स्लैब को बैठ के देख रहा होगा, जो ईएमआई पे करने वाला है वो देख रहा होगा कि उसको ईएमआई में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, सरकार उनको कितनी राहत देने वाली है। जो नॉर्मल जो युवा है वो देखने वाले होंगे कि उनके फीस में, मोबाइल गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में कितनी छूट मिलेगी। जो कामकाजी महिला है या फिर जो रोजगार के लिए देख रहे होंगे, वो ये देख रहे होंगे कि जो सब्सिडी मिलने वाली है, जो अलग अलग योजना है, उसमें कितनी बेनिफिट मिलेगी। तो बस सबकी निगाहें यही है कि इस बार बजट में क्या खास है, हमें क्या मिलने वाला है। हर किसी की निगाहें, चाहे वो उद्योगपति हो या फिर रिक्शा चलाने वाला हो या गांव में रहने वाला या शहर में रहने वाला या वो भारतीय जो भारत में ना रह के बाहर में बैठा है, उन सब की निगाहें इस बजट पे है कि इस बजट में वो लाल बैग में क्या कुछ खास है, उस लाल बैग के पिटारे से क्या निकलेगा, वो कौन सी चिराग हमें मिलने वाला है, उन सब की निगाहें इस बजट पे है। सृष्टि। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने यहाँ पर बताया कि सबको बहुत उम्मीद है, तो बृजवेश जी यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने एक और बात की कि पीएम जनधन योजना के तहत वो आदिवासी समाज तक उन्हें पहुंचना होगा और गरीबी को बहुत हद तक तो मिटाया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। तो यहाँ पर विशेष वर्ग के लोग, जो वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, उन पर भी फोकस करने की बात हो रही है। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, एक बात और है, भारत का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक गांव का विकास ना हो। क्योंकि अगर जब आपके गांव विकास करेंगे तो अपने आप जो शहर है, जो ब्रिज बनाने का काम जैसे एकल करता है, ऐसे ही वो विकास से ही वो जो ब्रिज है वो खत्म होगा। आपको बता दें कि बजट जो है वो पेश होना शुरू हो गया है। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने का वादा है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कैंसर रोकने की कोशिश है, टीकाकरण करेंगे, आय बढ़ाने के लिए मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण बढ़ाया जाएगा। इस तहत 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा ही बताऊं कि निर्मला सीतारमण ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है। और आगे जो ये आंकड़ा है, इसको इस बार 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बताऊं आपको, 3 नए रेलवे कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी को पक्का मकान मुहैया कराया जाए। स्किल इंडिया के लिए 1.47 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना को बढ़ाया जाएगा। मछली उत्पादन से गांव का विकास संभव है। मत्स्य उत्पादन को दुगुना करने के लिए पीएम मोदी ने जय अनुसंधान का नारा दिया है। इसको साकार करने के लिए 4 साल में आर्थिक विकास में तेजी आएगी, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है। 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बे को वंदे भारत में बदला जाएगा। आपको बता दूं कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वंदे भारत, उसमें अभी जो 40,000 नॉर्मल डिब्बे आपको दिख रहे थे, उसको हाईटेक किया जाएगा। 40,000 ऐसे डिब्बे को वंदे भारत ट्रेन में बदला जाएगा। हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जैसे कि पीएम मोदी की जब से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, एक बात कही जाती है कि जितने रेलवे स्टेशन नहीं थे, उतने ज्यादा हवाई अड्डे हो गए। अब इसकी संख्या और बढ़ जाएगी। यानी अब कोई देवरिया में रहता है, कुशीनगर में रहता है, सिद्धार्थ नगर में रहता है, तो उसे ऐसे नहीं कि 50 किलोमीटर दूर के लिए हवाई अड्डे पे जाना होगा। वो अपने घर के, अपने गृह जनपद के हवाई अड्डे पे सीधे पहुंच जाएगा। विमान कंपनियों को 1,000 विमान का ऑर्डर आगे बढ़ा रही है ये सरकार। तो ऐसे ये कुछ बजट है जो आने शुरू हो गए हैं। सृष्टि।
बिल्कुल ब्रिजेश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, लगातार मैं अपडेट ले रही हूँ, निर्मला सीतारमण लगातार जो बजट पेश कर रही हैं उसमें उन्होंने बताया कि 3 नए कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। ई वाहन पर उनका जो फोकस है वो यहाँ पर रहने वाला है। इसी के साथ किसानों को लेकर भी उन्होंने ऐलान किए हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? वो साफ है कि जितनी अच्छी बेहतर कनेक्टिविटी होगी उतना विकास संभव होगा। ऐसे बनने से कहीं न कहीं जो दूरी है गाँव से शहर की, वो कम होगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो पाएगा। जब कन्याकुमारी का व्यक्ति आराम से जम्मू कश्मीर पहुंच जाए, उसके सामान पहुंच जाए, उसका केसर पहुंच जाए, उसका सेब पहुंच जाए, इधर का जो नारियल पानी है वो जम्मू कश्मीर पहुंच जाए, तो कहीं न कहीं जो विकास है उसकी जो दूरी है वो कम हो जाएगा। इसीलिए ये जो कॉरिडोर है इसको प्रस्तावित किया गया है। Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.3 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees.
The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year.
States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST four-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much-needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismatch
mismanagement of those years, the government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 2 सेकंड रुकिएगा सर। सीतारमण जी। तो लगातार आपको हम बजट को लेकर अपडेट दे रहे हैं कि आखिरकार इस बजट में क्या कुछ खास है। तो आपको मैं बता देती हूँ कुछ खास बातें इस बजट से जुड़ी, कि जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा और साथ ही साथ राज्यों को अब 75,000 करोड़ रुपए का जो है लोन दिया जाएगा, वो भी बिना किसी ब्याज के, ताकि सुधार किया जा सके। इसी के साथ आपको बता दें यहाँ पर ई वाहन जो है उस पर जोर दिया जाएगा। 3 नए रेलवे कॉरिडोर यहाँ पर शुरू किए जाएंगे और निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि जो सरकार ने संकल्प लिए थे, आज उन्हीं संकल्पों की वजह से इतने बदलाव मुमकिन हो पा रहे हैं। यानी कि जो कुछ भी उन्होंने अभी तक सोचा था वो सब कुछ करके दिखाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% खर्च किया जाएगा इस बजट में, ये भी खास है। इसी के साथ आपको कुछ और भी बातें मैं बताती हूं, जहां पर 3 नए रेलवे कॉरिडोर शुरू करने की बात की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी को पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा, गरीबी को मिटाने पर पूरा फोकस यहां पर दिया जाएगा। इसी के साथ रोजगार के जो हैं अवसर यहां पर बनाए जाएंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। सबसे ज्यादा जो रोजगार की चीज है वो किसे उम्मीद थी? युवाओं को। महिलाओं की अगर आप बात करिए तो महिलाओं को लेकर के भी यहां पर कई सारे घोषणाएं की गई हैं ताकि किसी भी तरीके से हर वर्ग को यहां पर साधने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी लगातार हम बजट से जुड़े अपडेट दे रहे हैं उसमें हमें यही नजर आ रहा है कि हर वर्ग से जुड़े लोगों पर फोकस किया जा रहा है, किसी भी वर्ग को यहां पर निराश नहीं किया जा रहा है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा, यहां पर यह भी बात हुई। तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का निर्णय यहां पर लिया गया है। 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव अब तक लाया गया है। यानी कि आप सोचिए 2014 से अगर बात की जाए तो 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में अब तक बदलाव आया है। और सबसे खास बात यह थी यहां पर कि हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए भी यहां पर कोशिश की जाएगी। इसके लिए टीकाकरण किए जाएंगे। किसानों की आय बढ़ाने पर पूरा फोकस किया जाएगा। तो जैसे कि हम और आप यहां पर बजट को लेकर लगातार अपनी निगाहें टिकाकर बैठे हैं कि आज के इस बजट में हमारे लिए क्या खास होने वाला है, युवाओं के लिए क्या खास होने वाला है, महिलाओं के लिए क्या खास होने वाला है। तो ऐसे में किसानों को भी बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से। तो अब किसानों के लिए यहां पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसानों की आय बढ़ाने पर हम जोर देंगे। मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण बढ़ाया जाएगा, नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए कमेटी जो है वो गठित की जाएगी। राज्यों की, जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि 75,000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो यहां पर राज्यों को दिया जाएगा बिना किसी ब्याज के। 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ जो घर हैं वो और बनाए जाएंगे। तो आप सोचिए यहां पर देश की इकोनॉमी जो है वो सही दिशा पर जा रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये जो हमारी देश की इकोनॉमी है वो सही दिशा पर जा रही है। पारदर्शी शासन पर हमारी सरकार फोकस कर रही है। वित्त मंत्री
ने 20 मिनट तक लगातार केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहां पर हमने बदलाव किए हैं, कैसे 2014 में हमारे पास चुनौतियां थी, उन सभी चुनौतियों का हमने सामना किया, किस वजह से हमने किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना किया है। जो मोदी सरकार ने संकल्प लिए थे, उन्हीं संकल्पों की वजह से आज हम इतनी बेहतर स्थिति में आ चुके हैं। तो 2014 में जो चुनौतियां थी, देश उन चुनौतियों का जो सामना कर रहा था, उन सभी चुनौतियों को यहां पर खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। सबसे अहम और खास जो आज अनाउंसमेंट की गई है, जो सभी को कहीं ना कहीं खुश कर देगी, वो ये थी कि 300 यूनिट फ्री बिजली यहां पर दी जाएगी। अभी और भी बहुत सारे ऐलान यहां पर होने बाकी हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन पर भी, उनकी भी जो है इस बजट पर नजर टिकी है, क्योंकि देखिए, घर हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, सब कुछ बजट पर ही टिका होता है। इसलिए आज सभी की नजरें जो है बजट पर हैं। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम बजट से जुड़ी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहें। तमाम एक्सपर्ट्स के साथ भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बजट में क्या कुछ खास था और इसका कितना ज्यादा इफेक्ट आने वाले समय में पड़ेगा, कितना हद तक ये युवाओं के लिए सही था, महिलाओं के लिए कितना खास था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो किसानों को लेकर महिलाओं और युवाओं पर भी जोर यहां पर दिया गया और हमारे संपादक ब्रिजेश तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, जो हमें लगातार बता रहे हैं कि आज के इस बजट में क्या खास है। तो ब्रिजेश जी, एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं। मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुई जो सभी को खुश कर देगी कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, इसी के साथ राज्यों में सुधार करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए का जो है वो लोन दिया जाएगा। इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करिए तो 11% यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं हर तरीके से लोगों वर्ग पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है और मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करने की यहाँ पर बात हो रही है। अभी तक जितना भी बजट पेश किया गया है, जितनी भी बातें निर्मला सीतारमण ने अनाउंस की हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? किया उस बारे में एक नजर में आपको बताते चलता हूं। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं। जो पिछले बजट में जो आयकर स्लैब बनाया गया था, जिसमें 7 लाख तक की जो छूट दी गई थी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो जैसा था आपको उसके बाद वैसा ही इस बार भी आयकर इस बजट में कोई छूट नहीं दी गई है। साथ ही साथ जो उन्होंने बताया कि इस साल 10 साल में 3 गुना टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। जीएसटी गुड सर्विस टैक्स जब से आया तब से जो टैक्स कलेक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी का उन्होंने इस बार जिक्र किया। राजकोषीय घटा है 5.1% रहने का अनुमान है। 44.90 करोड़ रुपए खर्च और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। 10 साल में इनकम टैक्स के कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया है। साथ ही साथ उन्होंने जो उसके बाद जिसका जिक्र किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11% ज्यादा खर्च करेगी सरकार, इसका उन्होंने वादा किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पीएम मोदी सरकार लगातार कुछ बेहतर करने की बात करती है। चाहे वो लक्षद्वीप को देख लीजिए, लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ाने की बात हो, सरकार कुछ ना कुछ ऐसी योजना लाती है। आवास योजना हो गई, ब्याज मुक्त योजना हो गई, तो उसमें जैसे जो नए स्टार्टअप की बात होती है उसके लिए सरकार पिछले बार के मुकाबले 11% ज्यादा खर्च करने वाले। तो जो अपने स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं, जो नए उद्योग लगाने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज है। उसके साथ ही साथ 3 नए रेल कॉरिडोर शुरू होने की बात कही गई है, जिसमें 40,000 नॉर्मल डिब्बे को वंदे भारत में बदला जाएगा। इसकी भी बात रखी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 1.47 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा इसके तहत। तो कहीं ना कहीं इसमें रोजगार भी पैदा जो बढ़ेंगे वो दिख रहा है। इसके बाद उन्होंने जो जिक्र किया वो 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है, इसका उन्होंने जिक्र किया। निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री ने, लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ बढ़ा करने का निर्णय लिया है। जो लक्ष्य है उसे सीधे 1 करोड़ बढ़ाने का जो लक्ष्य है वो अंतरिम बजट में रखा गया है। 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में इससे सीधे तरीके से बदलाव आएगा। साथ ही साथ उसके बाद जो आप जिक्र कर रही थी 300
यूनिट हर महीने बिजली फ्री दिए जाने का वादा है। किसानों को का जो आय बढ़ाने की कोशिश है, मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण किया जाएगा, नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी भी गठित होने का कहा गया है। 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। फसलों में NaNO डैप का इस्तेमाल किया जाएगा। डेयरी विकास, जो दुग्ध के लिए डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा, दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। 1361 जो मंडी, आपको किसान कुछ दिन पहले सड़कों पर दिख रहे थे, किसान नाराज थे, मंडियों को जोड़ा जाएगा। अगले 5 साल में विकास की नई परिभाषा गढ़ने का जो वादा है वो इस बजट में दिख रहा है। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। आशा वर्कर जो सीधे तरीके से गांव को में जाती हैं, जो लोगों को शिक्षित करती हैं, महिलाओं को शिक्षित करती हैं, कहीं ना कहीं जो बीमारियों की संख्या है वो कम हो रही है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है आशा आयुष्मान योजना, उसके तहत उनको जोड़ा जाएगा और हर महीने 300 फ्री बिजली देने का वादा इस बजट में किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ घर और बनाने का वादा है। पिछले कई साल से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है। इसमें कई चीज देखने को, जो शहरी आबादी में रह रहे जिनके पास अभी तक छत नहीं है, वो लोन भी लेते हैं तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी मिलती है। ऐसे अब वो कहीं ना कहीं इस बार था कि बजट में वो खत्म कर दिया जाए, लेकिन एक अच्छी खबर है कि अब उसका जो लक्ष्य है वो 2 करोड़ बढ़ा दिया गया है। और निर्मला वित्त मंत्री ने 20 मिनट तक केंद्र सरकार की योजना गिनाई। आपको बता दें कि जब 11 बजे वो सदन में बोलना शुरू की, बजट पेश करना शुरू की, तो उन्होंने बताया कि पिछले बजट में हमने क्या काम किया। तो ऐसे में 20 मिनट तक बस योजनाओं पे बात करती रही, उन्होंने क्या बेहतर काम किया और कितना बेहतर काम किया। इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना है वो इस बजट में 2 करोड़ और घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया जाएगा। साथ ही साथ बात करें 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो क्या चुनौती थी, क्या चुनौतियों का सामना किया गया, उस पे भी निर्मला सीतारमण ने इस बजट सत्र में जिक्र किया। किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं पर इस बजट में जोर दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि बजट तो पेश हो गया, अब जल्द ही कुछ लोगों की और प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन जो टैक्स स्लैब की बात थी, टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं है। और खास साथ ही साथ इनकम टैक्स जो कलेक्शन है वो 10% बढ़ा है। सृष्टि, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत विस्तार से पूरी जानकारी दी कि अभी तक क्या कुछ उस बजट में खास तरह के चुनौतियों की बात तो लगातार की जा रही थी कि जो संकल्प बनाए गए यहाँ पर ब्रिजेश जी मोदी सरकार की तरफ से, उन्हीं संकल्पों की वजह से जो 2014 में चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को यहाँ पर पार पाया गया। लेकिन अंतरिम बजट में बिल्कुल अंतरिम बजट में लेकिन यहाँ पर जो बड़े ऐलान है उनसे परहेज किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो परंपरा चली आ रही कि अंतरिम बजट में कोई भी लोक लुभावने घोषणाएं नहीं की जा सकती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यही देखने को मिला है। लेकिन जितनी भी चीजों पर आपने बात की है, जितनी भी चीजों पर आपने विस्तार से जानकारी दी है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि देखिए उम्मीदें तो सबको थी, वो महिलाएं हो, किसान हो, व्यापारी हो, युवा हो, सबको इस बजट से उम्मीदें थी। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है? नहीं, पानी नहीं फिर गया। सरकार ने अपनी, जैसे मैंने बताया कि अपनी उपलब्धियों पे बात किया। सीतारमण ने कहा कि 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख वेंडरों को मदद की गई है। 34 लाख करोड़ रुपए जनधन के जरिए सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, ऐसा खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा है। पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। 3000 नए आईआईटी खोले गए हैं। 54 लाख युवाओं को शिक्षित किया गया, ट्रेंड किया गया है। 3 तलाक का भी उन्होंने जिक्र किया कि गैर कानूनी घोषित किया गया है। ऐसे कई योजनाएं हैं, कई बातें हैं जिसका जिक्र खुद निर्मला सीतारमण ने आज संसद में किया है। सृष्टि, बिल्कुल
बिल्कुल ब्रिजेश जी, तो जिस तरीके से आपने चर्चा की और पूरे बजट के बारे में जिक्र करते हुए हमें सब कुछ विस्तार से जानकारी दी, जैसे कि हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि हम बजट से जुड़ी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो लगातार आपको हम नए नए अपडेट्स देते जा रहे हैं कि आज के इस बजट में क्या कुछ खास है, क्योंकि आप सभी को उम्मीदें थी, वो महिला हो, हर वर्ग के लोगों को उम्मीदें थी, युवाओं को, किसानों को, व्यापारियों को, कि इस बजट में उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। तो अभी तक जितनी भी चीजें इस बजट से जुड़ी हुई आई, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। हमारे संपादक ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से सारी जानकारी दी। हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, बजट पर चर्चा करते रहेंगे। तो हमारे साथ दीपांशु गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, सीए हैं वो, तो इनसे हम चर्चा करते हैं इस बजट से जुड़ी और भी कई सारी जो बातें, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एकल भारत में। अभी तक जितना भी बजट में को लेकर की चीजें हुई, जो उपलब्धियों के बारे में जिक्र किया जाए तो उस पे आप अलग हटा दीजिए, लेकिन जितनी घोषणाएं अभी तक की गई हैं वित्त मंत्री की तरफ से, उन्हें आप कैसे देखते हैं? इम्प्रूवमेंट होगी और विकास की तरफ, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, और भी इसको संशोधन करके बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। दीपांशु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है मेरे को आवाज। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से ब्रिजेश जी के पास जाएंगे, उनसे ही सवाल करेंगे। तो ब्रिजेश जी, आपने जिस तरीके से विस्तार से हमें जानकारी तो दे दी कि इस बजट में क्या कुछ खास था, अभी तक जितने भी ऐलान किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे ज्यादा उपलब्धियों का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि जैसे कि ये परंपरा होती है, लोगों को उम्मीद तो बहुत थी कि कुछ बड़े ऐलान किए जाएंगे, लेकिन आज जो इस बजट में कुछ भी बड़े ऐलान अभी तक तो नहीं किए गए हैं। लेकिन महिला वर्ग हो या फिर युवा वर्ग हो, किसान हो, सबको इस बजट से उम्मीदें थी, तो कहीं ना किसी हद तक चीजें सही की गई। अगर हम राज्यों की बात करते हैं ब्रिजेश जी, 75,000 करोड़ का जो लोन देने की बात की जा रही है ताकि स्थितियों में जो सुधार किया जा सके, इसे आप कैसे देखते हैं? बार जब पेश किया गया था जो बजट, उसमें कई बातें साफ कर दी गई थी। कई जो स्लैब था, आपको 7 लाख का जो इनकम टैक्स छूट स्लैब था, वो पिछली बार ही बजट में पेश किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो बेनिफिट मिलना था, जो चीजें देनी थी, वो पिछले बजट में इस सरकार ने पहले ही वो राहत दे दी थी। चाहे किसान की बात हो, जिस तरीके से आयुष्मान की बात की गई, जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बात की गई, जिस तरह नए कॉरिडोर की बात की गई, नए ट्रेन चलाने की बात, तो पहले ही बजट में पेश किया जा चुका है। अब चूंकि आपको ये समझना होगा कि ये जो बजट है, ये अंतरिम बजट है। ये क्या कहते हैं, लक्ष्य, क्योंकि ये फरवरी का महीना चल रहा है, कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल में आपको चुनाव देखने को मिलेंगे। तो अगर ये बजट उस लिहाजा बनाया गया कि सरकार आने वाले 2-3 महीने में अभी क्या करने वाली, अगले सरकार का थोड़ा ना जिक्र अभी इस बजट सत्र में किया जा सकता है। तो उस हिसाब से आप देखिए जो वादे किए गए कि कितने, मतलब 11% बढ़ाने का, अगर आप सोचिए, अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बात हम कर रहे थे कि 11% वो अभी कह रहे हैं कि हम 2 महीने में उस चीज को अचीव कर लेंगे। तो अपने आप जो बातें हैं, जो चीजें हैं, वो दिख रही हैं। जो आईआईटी आईएम की बात हुई है, जो आईटीआई की बात हुई है, जो ट्रेंड करने की बात हुई, जो स्किल इंडिया की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पर उन्होंने बताया कि हमने क्या किया है। हम किसानों के लिए सब्सिडी देने की बात है, जो मत्स्य की मैंने बात की, जो उन्होंने शुरू किया, जो 3,000 यूनिट बिजली की बात हुई, तो वो उस पर काम हुआ है। बजट में स्वास्थ्य के लिए ऐलान किया गया है, मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल कॉलेज बनाए गए। हमारी सरकार ने 9 से 14 साल की बच्चियों को कैंसर वैक्सीनेशन, जो मैं बता रहा था आपको, वैक्सीन ऑफ फ्री किया जाएगा। तो ऐसी हजार योजनाएं हैं। और आप देखिए कि स्किल इंडिया के लिए जो सब्सिडी की बात है, उस पे उन्होंने पहले अपने दो जो इंटर्म बजट है, उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इस और उन्हें काम करना है। तो सृष्टि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक नपा तौला बजट है, जिसके साथ आप आम चुनाव में आम आदमी के पास जाएंगे और अपने लिए वोट मांगेंगे। हाँ जी सर। हाँ जी।
बिल्कुल ब्रिजेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ दीपांशु जी जुड़ गए हैं, सीए हैं। दीपांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी। मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से अभी तक जो परंपरा चली आ रही थी कि कोई भी बड़े ऐलान नहीं किए जाएंगे, तो उसी परंपरा को यहाँ पर फॉलो किया गया है, लेकिन उसके साथ भी कई सारी घोषणाएं की गई हैं, जैसे कि राज्यों को लोन देने की बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करिए तो 11% खर्च करने की यहाँ पर बात की गई है। इसी के साथ कई सारे और भी ऐलान बड़े किए गए हैं। तो अभी तक जितना कुछ भी इस बजट में आपने देखा, उसे आप कैसे देखते हैं और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि ये सब चीज़ें अपने डेवलपमेंट के लिए जो भी जिस जिस क्षेत्र में ऐलान किए गए हैं, ये एक खाली एक तरह से इंट्रीम ही है, और इसको और जितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है उतना किया जाएगा। और इसका पूर्णतः जो मेन बजट है, जो कि निर्मला सीतारमण जी द्वारा बताया जा रहा है कि अपने इलेक्शन के बाद पेश किया जाएगा, उम्मीद है कि उस पे और बढ़िया तरीके से इसको पेश किया जाएगा। बिल्कुल ब्रिजेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। जुलाई में विकसित भारत का रोड मैप पेश करने की यहाँ पर बात की गई है। इसी के साथ जो तमाम अभी हम 4 सालों में जितने बदलाव हमने देखे, उस पर भी यहाँ पर फोकस किया गया। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो विकास हुआ है अभी तक, इस पर ही पूरा फोकस रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए सृष्टि, ये बहुत टेक्निकल सवाल है कि मैं कैसे अभी बता दूं कि अगला बजट कौन पेश करेगा, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव होना है। मई में ये तय हो जाएगा कि कौन चुन के आना है। निर्मला सीतारमण अगले कैबिनेट अगर मान लेते हैं, अगर एनडीए सरकार बनती है तो अगला कैबिनेट किसके पास होगा, ये बहुत टेक्निकल सवाल है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। बात यह है कि इस बजट में क्या बात रखी गई। इस बजट में जो रखा गया वो स्किल इंडिया, जो हम कहते हैं कौशल भारत मिशन है, 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है, इसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने जैसे नहीं, मैं आपको बताऊं कि आज सदन में आके उन्होंने एक तरीके से बता दिया कि उन्होंने साइंस में आदित्य की चंद्रयान का जो उन्होंने जिक्र किया, इंद्रधनुष का जो जिक्र किया, स्किल इंडिया का जो जिक्र किया, उन्होंने बताया आयुष्मान भारत का, तो वो एक तरीके से पूरा समरी बता दिया कि हमने अभी तक 2014, उन्होंने 2019 का जिक्र नहीं किया। इस सवाल को, इस बात को बहुत ध्यान से कोट करना चाहिए। वो चाहती तो वो बताती, क्योंकि वो जो सेशन है 2019 से 2024 का है। मोदी 2.0 जो गवर्नमेंट चल रही है, ये दूसरा गवर्नमेंट है। वो 2019 से 2024 बताती, जिस दौरान वो वित्त मंत्री थी, क्योंकि इससे पहले तो वित्त मंत्री भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने इस पूरे में वो 2014 से उन्होंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से इस देश में क्या क्या परिवर्तित हुआ। तब से उन्होंने हर एक जो भी योजना लाई गई, जो भी बेनिफिट्स दिए गए, हर चीज का जिक्र किया। उन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक के आईएम, आईआईटी, इन सब का जिक्र किया। कितने स्किल हुए, कितने सब्सिडी दी गई, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, जीएसटी उन्होंने बताया कि हमने कितना ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया है। यानी जो जीएसटी की चोरी, जो टैक्स चोरी पहले होती थी, उसमें कहीं ना कहीं कटौती आई है। तो ये सब जिक्र उन्होंने आज आके बताया, और एक जैसे कहते हैं ना, रिकॉल करने वाली चीजें कि हमने पिछले 10 सालों में क्या किया, वो रिकॉल हो जाए। तो 1 घंटे के भाषण में 10 साल के कामों को कम शब्दों में समझाते हुए, छू के जाते हुए उन्होंने ऐसा किया है। सृष्टि, बिल्कुल ब्रिजेश जी, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया है। देखिए, बहुत ही बड़ा आंकड़ा यहाँ पर पेश किया गया है। इसी के साथ किसानों की अगर बात करते हैं, तो किसानों के लिए भी बेहतर काम किए जा रहे हैं, उनके लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। बिल्कुल ब्रिजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार आपसे हम बजट पर चर्चा कर रहे थे, आपको भी इस बजट से कई सारी उम्मीदें हैं। तो हम फिर से हाजिर होंगे, बजट से जुड़ी चर्चा हम करेंगे, क्या कुछ खास है इस बजट में वो आपको हम बताएंगे। तब तक आप सभी एकल भारत के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।